Hello everybody, welcome to iExamBee's Legal Week. This is Amrita, your law faculty here at iExamBee. Embrace the iExamBee learning experience with us. And if you're preparing for any competitive examination after your law, you're at the right place. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Legal Bee, and stay tuned with us with all the kind of videos that are beneficial for your exam preparation, which also helps you in framing a good strategy and gives you good content. If you have any queries, you can write to us and email on hello@iexamby.com. आप हमें 9205524028 पे कॉल भी कर सकते हैं and you can visit our website www.iexamby.com and check out the demo of the courses available. I am continuing my series of important sections that I am discussing for all the laws. Today I am going to pick up how to study Motor Vehicles Act. मोटर व्हीकल्स एक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एंड इसमें से अगर आपको पता है इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प होगी पढ़ाई करने में. इन वीडियोस के साथ हमने पीडीएफ्स भी अटैच किए हुए हैं जिसमें सेक्शन समरीज हैं. सो आप ज़रूर उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके चेक कीजिएगा. सेक्शंस के साथ साथ उनकी शॉर्ट में समरी भी दी हुई है. इट्स अ टैबुलर फॉर्म डॉक्यूमेंट, सो प्लीज चेक इट आउट. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन. These are the sections. First section, always I keep it as you should go through, read it for all the acts. It talks about the applicability of the legislation, commencement. Then coming to definitions, Motor Vehicles Act में definitions काफ़ी ज़्यादा important role play करते हैं. Competitive exams में Motor Vehicles Act से कई बार definition से questions पूछे जाते हैं. So if you check out section 2, clause 1 deals with adapted vehicle, clause 2 articulated vehicle, clause 3 axle weight, clause 4 certificate of registration, 4A community service. This has been now added in the new criminal laws. BNSS में अगर आप चेक करेंगे BNS में तो कम्युनिटी सर्विस आपको पता चल जाएगा. वो यहाँ पे ऑलरेडी है मोटर व्हीकल्स एक्ट में 4A. यहाँ पे भी अमेंडेड प्रोविजन ही है, सो वो इम्पोर्टेंट है. कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्लॉज 7, क्लॉज 9 ड्राइवर के डेफिनेशन में कौन आता है. देन ड्राइविंग लाइसेंस क्या है. गोल्डन आवर क्लॉज 12A. ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कई बार इसमें से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है. मेनी टाइम्स इट्स वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर्स फ्रॉम एमवी एक्ट. सो क्लॉज 12A गोल्डन आवर, 13 गुड्स, 15 ग्रॉस व्हीकल वेट, 17 heavy passenger motor vehicles, which are the vehicles that come under this category, 19 learner's license, 21 light motor vehicle, 28 motor vehicle or vehicle, all the categories that are included in the vehicles. Then coming to what is the meaning of omnibus, 29, 30 owner. अभी owner के definition में कौन कौन आता है, that should also be known by you. Many times they just trick you and give you some options and you get confused that who is covered under owner, who is covered under driver. So all these things we should be very clear with. Registered axle weight 36, 42 clause state transport undertaking, 45 traffic signs, 47 transport vehicle, 48 clause 48. Okay, it's section 2 ही चल रहा है अभी तक. सेक्शन 2 क्लॉज 48 अनलेडन वेट क्या होता है. सेक्शन 2 कैपिटल ए अगेन एन अमेंडेड प्रोविजन, ई कार्ट और ई रिक्शा ये इलेक्ट्रिक होता है तो इसका भी डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा. नाउ कमिंग टू द अदर प्रोविजंस. सेक्शन 3 नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस. सेक्शन 4 एज लिमिट इन कनेक्शन विद द ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स. एवरीबडी शुड नो व्हाई द ड्राइविंग लाइसेंस इज नेसेसरी एंड उसमें एज लिमिट क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स की एक्चुअली एज लिमिट क्या है ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो सेक्शन 3 सेक्शन 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है. सेक्शन 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ मोटर व्हीकल फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4. ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द ओनर्स ऑफ द मोटर व्हीकल. सेक्शन 6 रेस्ट्रिक्शन ऑन द होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करने पे क्या रेस्ट्रिक्शन है. सो सेक्शन 6 कवर्स दैट. Section 8 grant of learner's license, Section 9 grant of driving license. अभी learner's license का कॉन्सेप्ट क्या है ये हमें पता होना जरूरी है एंड ड्राइविंग लाइसेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, learner's license की एज लिमिट क्या है, कब learner's license मिलता है. All these things are questionable. प्रैक्टिकली भी हमें ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम जनरली ड्राइविंग करते हैं, हमें पता होता है लाइसेंस के बारे में, बट देन इन द लॉ वी शुड नो वेयर इट इज कवर्ड. सेक्शन 39 नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 43 टेम्पररी रजिस्ट्रेशन क्या है. सेक्शन 50 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कवर करता है, व्हाट इज दैट.
सेक्शन 51 स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग मोटर व्हीकल सब्जेक्ट टू हायर परचेज अग्रीमेंट. ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है कि हायर परचेज अग्रीमेंट क्या होता है एंड जो भी मोटर व्हीकल हायर परचेज अग्रीमेंट को सब्जेक्टेड है तो उनका आगे क्या हो सकता है. दैट ऑल्सो वी शुड नो. सेक्शन 59 the age limit of motor vehicle, that power rests with who fixes that. Section 66 necessity of the permits. What is the meaning of permit? Now transport vehicles में permits का concept काफी important होता है तो थोड़ा आप उसके बारे में पढ़ सकते हो. Then coming to the driving rules, section 112 limits of speed, 119 duty to obey the traffic signs, 130 duty to produce license and certificate of registration, 134 duty of driver in case of accident and an injury to a person, 145 उसमें भी कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैंने यहाँ पे क्लब करके आपको दिए क्योंकि ज़्यादा नहीं है. ये वाला जो चैप्टर है स्पेसिफिकली इंश्योरेंस बेस्ड जो भी आप एग्जाम्स देने वाले हो उसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 145 ऑनवर्ड्स. उसमें ये सारे डेफिनेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं तो सजेस्ट करूँगी ये सारे ही डेफिनेशंस आप पढ़ना, जो मैंने स्किप किए वो भी. चेक आउट द सेक्शन समरी डॉक्यूमेंट फॉर दिस. Section 145 clause A deals with authorized insurer, then B certificate of insurance, hit and run motor accident, very important. Clause D, F policy of insurance, I third party. Third party में कौन covered है? All these are the crux. 146 necessity for insurance against third party risk. 147 requirements of policies and the limits of liability. 149 settlement by the insurance company and the procedure thereof. What is basically the concept of settlement over here? What is the procedure and all? 150 duty of insurers to satisfy judgments and awards against persons insured in respect of third party risks. So judgments and awards को अगर आपको satisfy करना है in respect of third party risks, what are the duties of the insurers? So that is again an important area. 151 rights of third parties against insurers or insolvency of insured. 158 production of certain certificates, license and permit in certain cases. 161 special provisions as to compensation in case of hit and run motor accident. Then the scheme for golden hour that is covered under 162, very important. Payment of compensation in case of death or grievous hurt, 164, very important. Then coming to the tribunal part, motor accident claim tribunal होता है. I think आप सबको ये पता होगा. तो ये सारे मोटर एक्सीडेंट के केसेस जो है ट्रिब्यूनल्स के पास चलते हैं. अगर कोई सिटी में ट्रिब्यूनल अलग से कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है तो वो ट्रिब्यूनल के पावर डिस्ट्रिक्ट जज को दिए गए हैं. दे आर ट्रीटेड एज मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल. सो द क्लेम्स ट्रिब्यूनल इज कॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 165. देन व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर कॉम्पनसेशन. MACP का जो एप्लीकेशन है 166 के अंडर होता है. Then the awards are given by the tribunal. What is the procedure and powers of the claims tribunal? Can you add as insurer in the cases? How you can implead them? Section 170. Appeal lies to where? Appeal lies to High Court. That is also covered in 173. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपील्स किधर जाती है. जब भी आप ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ते तो बेसिक प्रोसीजर और अपील कितने दिन में कहाँ जानी है ये हमेशा कॉमन होता है. You should be studying that. Bar of jurisdiction of the civil courts is there because why civil courts will again entertain the cases when tribunal is there. So 175 and 177 the general provisions for punishment of offences. इस एक्ट में काफी सारे पनिशमेंट्स हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े बेसिक पनिशमेंट्स पढ़ लीजिएगा जितना आप याद रखें. बट सबसे ज्यादा जो क्रक्स है इस पर्टिकुलर एक्ट का पहले आप उस पर फोकस कीजिए अगर आप इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें. तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ट्रिब्यूनल वाला चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बेसिक ड्राइविंग रूल्स रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज हाउ गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम. इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू रीच आउट टू अस. Prepare 50% faster with us. Download our app from the Google Play Store and check out all the course features available even on our app. Thank you everybody.